Bismillahirrahmanirrahim. This is the last topic, periodic table, and this periodic table is actually a tabular array of the chemical elements which are organized in a very specific and organized manner on the basis of their atomic number. From the element with the lowest atomic number, that is the for hydrogen, to the highest atomic number, that is the organism. So basic for the periodic table is the atomic number, and we know what is meant by the atomic number. It means the number of protons in the nucleus of an atom. So this hydrogen has atomic number 1. So it is the entire periodic table is started from hydrogen, and the last is the organism, which is having the atomic number 118. So this organism is actually the synthetic element, and it is a radioactive element or metal hai ye. Now let's have a first look on the periodic table. The structure. This is the periodic table. If you look at the periodic table, so I have selected this figure for the periodic table, which composed of different colors, and each color is representing the specific group or the kinds of elements. Right, starting from here. Right, starting from. Let me get this thing. Okay. Okay, let me have this figure so that you can understand very carefully. So this is this color is actually the alkali metals. Green hydrogen है, ठीक है? Green hydrogen है, or it's different. Please don't mix this hydrogen with these colors. Okay, hydrogen is exceptional case. राइट तो ये जो इसमें दो आपको नज़र आ रहे हैं, लेट मी ये पिछली एग्जाम इसकी है, क्या कहते हैं पिक्चर, लेट मी रिमूव दैट पिक्चर. Yes, okay, so now you can understand it clearly. So if I go to the colors, the colors represent actually the different groups over here. Now this is the hydrogen, which is entirely different, and please don't confuse with the other carbon, nitrogen, oxygen, etc. This dark green color is alkaline earth metals, blue color is for transition metals, black color is for post transition metals, this orange color is for metalloids, these are other non-metals, purple color is for halogens, okay? And this is color for, this color is for noble gases. इसके बाद हम आ जाते हैं, ये वाला जो कलर है ये noble gases का है, right? Then we come to this color. This color represents the actinide series, and this lanthanide series, and this color will represent the actinide series. So if we count to, we can say that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपको colors sequence में नजर आएंगे, which represent something about some information about the this periodic table. Now let's move to the next slide. So let's talk about the periodic table. Yes, the lowest element on the periodic table is the hydrogen. It has atomic number 1. Highest element with highest atomic number is organism, and this is actually a synthetic element, and it is not the natural element, and it has some radioactive properties. Then we come to the structural studies of the periodic table. So periodic table of elements actually arranges all of the known chemical elements in a very informative array. So just by looking at this periodic table, we can conclude, we can understand a lot about the nature and the behavior of the elements.
So elements जो हैं these are actually arranged from left to right. okay, एक तो ये सीक्वेंस इनका बनता है, राइट इनका सीक्वेंस जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, एंड अगला सीक्वेंस जो है उनका बनता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट. So this is the sequence. And what is the basis from left to right? Increasing in order of increasing atomic number. आप ऐसे जाएंगे तो increase हो रहा है atomic number. If you come from the top to bottom, again the atomic number is increased. अब बहुत सी चीजें आपने इसके अंदर अंडरस्टैंड करनी है. अपकमिंग डिस्कशंस में आई एम गोइंग टू explain to you. अच्छा, अब ये नहीं कि this only the atomic number is increasing. So this order generally coincides with increasing atomic mass also. अच्छा, अब for example sodium को, if you look at the sodium, this is the sodium, right? So sodium sits in the third period, which means a sodium atom typically has electrons in the first three. थर्ड पीरियड का मतलब है कि फर्स्ट थ्री एनर्जी लेवल्स में इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. देन वी कम टू पोटेशियम. पोटेशियम फिर आप नीचे आ जाएं रुपेडियम, एंड इस तरह इनके एनर्जी लेवल्स जो हैं फ्रॉम टॉप टू डाउन इंक्रीज हो रहे हैं. क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज when you coming from top to bottom, atomic number increase हो रहा है. What is meant by increasing atomic number? के protons increase हो रहे हैं. protons increase हो रहे हैं तो electrons increase हो रहे हैं. Is that clear? So इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास periodic table में ये तो आपकी मतलब ये सारी rows हैं. अब ये आपके columns हैं. These are known as columns. ये आपका column number 1 है. This is column number 2, this is column number 3 and so on and so. अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर from beryllium we jump to boron. We are not including these things. Okay, ये बहुत deep explanation है. Right now you are not in the position to understand all these things because ये depth है इसकी periodic table की, जो with the upcoming discussion you will understand. The columns of these are the columns. Okay, these are the columns, right? So the columns हैं periodic table के, they actually represents groups or families, and all the members of the groups and families often behave identically, similarly, because they have the same number of electrons in their outermost shell. For example, if I go to lithium, for example, so lithium के outermost shell में कितने electrons हैं? 1. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. बेरिलियम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2. 2 for magnesium, 2 for calcium, 2 for strontium, 2 for barium and 2 for radium. So इसी तरह अगर हम इधर आ जाते हैं बोरॉन के ऊपर, ठीक है, तो बोरॉन में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसी सीक्वेंस में है. लेकिन डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि दिस साइड एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, दिस साइड लूज द इलेक्ट्रॉन्स. इनकी कैपेसिटी कितनी है लूज करने की? इसकी 1 है, इनकी 2 है, ठीक है, राइट, ये 3 है, राइट. अब कार्बन में स्टेप हम रुक जाते हैं बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स are in the outermost orbital, so it's not possible to lose 4 electrons completely. Okay, so फिर हम शेयरिंग की तरफ चलते हैं. अब जो ये वाले कार्बन से ऑनवर्ड्स जो हैं, ये 3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस, they accept the electrons. Okay, they gain the electrons. तो इनकी कैपेसिटी कितनी है? नाइट्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है और फ्लोरीन की 3 है. Is that so? यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 2 3 2 1. Is that okay? So ये आपका आ जाता है सारा.
यहाँ पे कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स 3 है, ऑक्सीजन 2 एंड फ्लोरो 1. So यहाँ 1 2 3, either 3 2 1. Is that clear? Now we come to the very important thing that is known as the types of elements. So types of elements में हम आ जाते हैं. First को हम कहते हैं alkali metals. They are all metals, good conductors of heat and electricity. जो second group है आपका यहाँ पे, इसको हम कहते हैं alkaline earth metals. So these are alkaline earth metals. बाकी सारे blue, these blue one area is the transition metals. Orange, they are known as metalloids because they exhibit both the properties of metals and non-metals. Black जो हैं, they are known as post-transition metals, जो कि मतलब advanced transition metals हैं. ये green one जो हैं, they are known as other non-metals, right? Purple में की जो family है, it is known as halogen family. This family, last वाली family, this is known as noble gas family, ठीक है. और green one जो है, it is known as the lanthanide series. और जो family है ये वाली orange, it is known as actinide series. So metals आपके पास हैं, semi metals हैं. A periodic table में elements का different structure, appearances हैं, they have different appearances. Some are metals, some are semi metals, some are non metals. कुछ specific groups हैं आपके पास, जैसे alkaline earth metals, alkali metals, noble gases, halogens, rare earth metals, transition. तो ये जो आपके पास some post जो हैं, ये rare हैं आपके पास सारे transition metals. Now the last इसमें जो आपको अच्छी तरह समझना है, वो ट्रेंड्स को आपने समझना है. So this is the groups कौन कौन से हैं. The periodic table has 8 main groups, 1 2 13 14 15 16 17 and 18, जिनको हम पहले 1A 2A 3A 4A ऐसे कहा करते थे. ये आपका जो periodic table है, इसमें total how many groups are there? 8 groups है. How many rows are there? 8. और कॉलम्स कितनी है? 7 रोज हैं और 18 कॉलम्स हैं. ये फिगर आपको रिमेंबर करनी है फॉर द क्विज. ओके. अब व्हाट इज मेंट बाय रो? ईच रो रिप्रेजेंट्स वन पीरियड. ईच रो जो है ये पहला पीरियड शो करी. सो पहले पीरियड में ओनली 2 हैं. सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन. In the third period, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. So on, right? So each row represents one period. The period number of an element indicates how many of its energy levels house electrons. Again, जो 1 में है वो 1 उसका एनर्जी लेवल है. जो 2 में है रोज में, वो 2 एनर्जी लेवल्स हैं. जो 3 है उसमें 3 एनर्जी लेवल्स हैं, एंड सो ऑन. Sodium, for instance, sits in the third period, which means a sodium atom typically has electrons in the first 3 energy levels. Now we come to families. Families में आपको already ही explain कर चुकी हूँ कि कितनी families हैं. Noble gases जो हैं, ये आपकी नोबल गैसेस जो हैं, रियर गैसेस भी हैं इसके अंदर. ये they are known as rear gases and they are mostly unreactive, right? Now we come to the trends in atomic size. तो मैं यहाँ पर इस लेक्चर को कर रही हूँ, फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया. तो कंटिन्यू आई विल देन आफ्टर मगरिब प्रेयर्स. तो फिर मैं ट्रेंड से इसको स्टार्ट करूँगी. थैंक यू.